देखिए 96%, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, 96% खुदरा व्यापार आज भी असंगठित क्षेत्र के अंदर है, केवल 4% संगठित क्षेत्र में है, और वो भी जो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उस पर कोई पाबंदी इस देश के कानून में नहीं है, ना ही कोई ऐसी नीति। तो वही दोहरा रहे हैं। अब जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं वही कहूंगा। अब माननीय सदस्य, सवाल जो पूछा गया है उसका जवाब नहीं मिल रहा है, उसी बात को दोहराया जा रहा है। तो इसके पहले कह चुके हैं। देखिए, जब जवाब एक ही है मैं दो जवाब कैसे दे दूं? और दूसरा, आप नियत की बात कर रहे हैं, मैं आपकी संतुष्टि के लिए अपनी सरकार की बदनीयती स्वीकार करूं और आपकी बात को मान लूं? ये नहीं कहा, कोई उत्तर नहीं दे कहा सकता। कि दूसरा आप कराइएगा, नियत की जब बात करते हैं, दूसरा स्टडी आप कराइएगा, हम ये करता। जानना चाहते हैं सरकार क्या दूसरा स्टडी करवाने के लिए तैयार है? All right. Shrimati Karat. Sir, I want to know whether there's any change in policy as far as allowing FDI into the retail sector is concerned, because giving the news reports of the Prime Minister's visit, we have seen that you are changing your policy on this. Please give a categorical statement in the House. Sir, I am responding to the question which is there before the House. I am not responding to what Ms. Karat has said about a newspaper report emanating from the United States of America. Secondly, we have a very clear policy. As I mentioned in the extent policy, no FDI is allowed in the retail sector, and we have no intent to review FDI in retail sector except what is permitted is single brand retail, and that too in specific products in the high-end chain. Question are over. Papers to be laid on the table. Shri Sindhya. List of business of Rajya Sabha today. At serial number 2 in today's revised list of business. Shri Harish Rawat. I think there's some voting at number 3 in some committees. Shri RPN Singh. Room number 63. Mention against Room my number name 63, at serial number upstairs. 4 of today's revised list. Some committees, sir. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, I beg to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 24th November 2009 passed the Rubber Amendment Bill 2009. I lay a copy of the bill on the table. Report of the Department-led Parliament Standing Committee on Human Resource Development, Shri Sudarshan Nachiyappan. 218th report in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development on the National Commission for Minority Educational Institutions Amendment Bill 2009. Report of the Committee on Welfare and Scheduled Caste and Scheduled Shri Praveen Rashtapal. On the table a copy of the first report, Hindi and English version of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Report of the Department-led Parliament Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution, Shri Matilal Sarkar. I beg to lay on the table a copy in English and Hindi on the first report of the Department-related Parliament Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution as mentioned against me. Report of the Department-led Parliament Standing Committee on Health and Family Welfare, Shri Amar Singh. Lay the report, 35th report on the action taken note furnished by the Department of Health and Family Welfare on the recommendation observation contained in the committee's 27th report on demands for grant 2008-2009 of the department. 36th report on action taken note furnished by Department of Ayush on recommendation observation contained in the committee's 28th report on demands for grants 2008-2009 of the department, and 37th report on action taken note furnished by the Department of Health Research on the recommendations observations contained in the committee's 29th report on demands for grants 2008-2009 of the department. Motion for election of committee and official language, Shri Ajay Mahoday,
मैं आज के कार्य की संशोधित सूची में श्री पी चिदम्बरम जी के नाम पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राजभाषा अधिनियम 1963 का 19 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में यह सभा 18 सितंबर 2009 से समिति की सदस्यता के लिए श्रीमतीलाल सरकार के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर Yes. It is a central clock, so there is some problem from yesterday. Jumping from 12th. रिक्त हुए स्थान पर सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राजभाषा समिति का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्रवाई करें। Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Motion is adopted. Sri A.K. Antony ji to move motion for election of member for Central. With your permission, I beg to move that in pursuance of clause 1 of subsection 1 read with subsection 1A of section 12 of the National Cadet Corps Act 1948, this House do proceed to elect in such manner as the Honorable Chairman may direct one member from among the members of the House to be a member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Motion is adopted. Now call attention. Sri Kalraj Mishra to call the attention of the Minister for Sports and राष्ट्रमंडल खेल 2010 की तैयारी की स्थिति के बारे में मैं खेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं। Mr. Minister, statement. You have to read the statement. Shall I read the statement Yes. first, sir? Right. Statement is to be circulated. I thought Either those. Sir, the Commonwealth Games is a mega multidisciplinary sporting event in which around 8,000 sportspersons from 71 nations and territories of the Commonwealth will take part in 17 sports disciplines. The Games will be held in Delhi from 3rd to the 14th of October 2010. The 19th Games were allotted to Delhi on 13th November 2003. The host city contract, which is the governing document for the Games and lays down the responsibilities and roles and obligations, was signed in November 2003. The signatories were the Government of India, the Government of Delhi, the Commonwealth Games Federation and the IOA, Indian Olympic Association. The organizing committee of the Commonwealth Games was registered as a society with the Government of Delhi on 10th February 2005. The OC thereafter became a signatory to the Games. In the overall scheme for the preparation of the Commonwealth Games, the sports infrastructure is to be developed by government agencies and funded by the government. The responsibility for the conduct and delivery of the Games is of the organizing committee. For this purpose, the OC is funded upfront by the government as a loan to be recouped on the basis of revenue neutrality. The development, upgradation and improvement of the city infrastructure are to be done by the Government of Delhi with support of the Government of India. Out of the 17 sports disciplines of the Games, 9 will be held in the stadia of the Sports Authority of India, 4 in the stadia of DDA, and 1 each in the venues of the Government of Delhi, New Delhi Municipal Committee, Delhi University, and All India Lawn Tennis Association. A table showing stadia-wise the expected dates of completion are with the annexure, which, sir, I have submitted to you and will be distributed in due course. The estimated cost of the competition and training venues is around 4,100 crores.
Financial sanction for all the stadia have been awarded and work is progressing at a rapid pace. The work on 3 stadia, namely SPM Swimming Complex, Dr. Karni Singh Shooting Range and the Cycling Velodrome had a delayed start due to some design issues. All possible measures are being taken, including increase in number of supervisory staff and labor, increase in working hours, deployment of additional machinery, close monitoring of procurement of special and critical items. The group of ministers constituted for the Games reviews the progress every week. The stadia will be completed in time for the Commonwealth Games to be held in October 2010. I may mention that most of the stadia was started in 2008 and some in 2007. The Games were signed in 2003. The OC is responsible for the conduct and delivery of the Games, which includes all logistical and stay arrangements for about 8,000 sportspersons, as well as all arrangements for the technical officials and media persons. The OC is also responsible for the technical conduct of the sports, sponsorship, ticketing, merchandising, ceremony, etc. The government has sanctioned a budget of 1,620 crores for the organizing committee. In September 2009, the President, Commonwealth Games Federation, expressed some concerns related to the capacity of the OC to deliver operationally. On the occasion of the launch of the Queen's Baton in London in October 2009, these matters were discussed between the President CGF and the Chairman OC in the presence of the Minister of Sports. And they were resolved to the satisfaction of both CGF and OC. A joint statement affirming this was issued thereafter. In order to strengthen the internal management and financial administration of the OC, at the request of the Chairman OC, a retired Secretary to the Government of India was posted to the OC as Chief Executive Officer in October 2009. 3 other senior serving officers, including a financial expert, and they already have one, were also made available to the organizing committee. All officers have joined and are functioning. The Games Village is being developed near Akash Darshan Temple by the DDA on public-private partnership model. The work is being closely monitored by the Ministry of Urban Development. The work is well on schedule and will be completed in time. The development and upgradation of the city infrastructure is the responsibility of the Government of Delhi. Major upgradation works have been planned and are under implementation, including the Bara-Pula-Nala elevated corridor, which will provide a quick access for sports persons from the Games Village to the Nehru Stadium. The Chief Minister of Delhi is carefully monitoring these works and addressing issues as they arise. The group of ministers also reviews these works regularly. The wide range of city development works, including augmentation of roads, metro, and other transportation and communication networks, traffic management systems, will leave a lasting legacy after the Games. The government is investing substantial amounts for the upgradation of the various stadia to be used for the Games. These stadia will become state-of-the-art venues of international standards. Some of them are really high-level international standards stadiums in terms of architecture, etc. A revenue generation mechanism is being evolved which will ensure the upkeep and maintenance of these facilities at optimum levels, and at the same time their use for sports activities after the Games. The Ministry's Tourism is working on making available adequate accommodation for the visitors during the Games. Taking into account the current availability of hotel rooms in the NCR, an additional requirement of 30,000 rooms has been estimated by the Ministry of Tourism. Apart from the additional hotel accommodation being developed in Delhi
and NCR, guest houses are being upgraded and housing units of DDA will be operated as guest houses. Together with the bed and breakfast establishment in the city, the requirement of additional rooms for the Commonwealth Games should be met. A task force under Secretary Tourism is monitoring the availability of hotel accommodation. The Prasar Bharati has been designated as the host broadcaster for the Games. The latest technology will be used for broadcasting during the Games. For the first time in the history of the Games, the entire transmission will be high-definition TV. Prasar Bharati has already established a top-level international consultant for the production and coverage and is in the process of engaging the consultant for the International Broadcasting Center. The work is being done under the close supervision of the Ministry of Information and Broadcasting. Security during the Games is a matter of utmost importance. The Ministry of Home Affairs and the Lieutenant Governor of Delhi are closely monitoring all the security arrangements for the Games. An empowered security committee headed by the Home Secretary of India regularly reviews the security schemes and arrangements for the Games. A comprehensive security plan has been drawn up, which incorporates venue emergency management plan, disaster recovery plan, transport security plan, airspace surveillance and protection plan. A fully integrated venue surveillance scheme is being developed along with a secure security communication system. Ministry of Home Affairs has held security briefings of the High Commissioners of Commonwealth countries on 9th September 2009, and a Security Administrators Conference was held in Delhi on 23rd September 2009 to appraise the representatives of all the countries with the security arrangements for the Games. The Ministry of Home Affairs and the LG of Delhi are taking all necessary measures to ensure that the Games are completely incident-free and are conducted in a secure and safe environment. To improve the performance of our athletes in the Commonwealth Games, for the first time, Government has approved in June 2008 a scheme at a cost of 678 crores for the comprehensive training and coaching of athletes. 1,064 core athletes of the 17 disciplines have been selected and are undergoing intensive training and exposure. 158 Indian and 24 foreign coaches of the highest caliber have been engaged for their training, along with 70 other support personnel, including sports analysts, sports medicine doctors, and physiotherapists. Teams are being sent regularly on visits abroad for training and competitions. It is expected that with these measures, our sports persons will do very well in the Commonwealth Games. Finally, I would like to assure the House that the Government of India and the Organizing Committee are fully committed to complete all preparations for the Games in good time and to train our athletes for a good performance. an exhaustive नहीं ये घड़ी मैं बता देता हूँ from yesterday this is not we cannot meddle with it because it is centrally नहीं मैं ये घड़ी देखता हूँ वो घड़ी नहीं देखता इतना लंबा स्टेटमेंट है सर नहीं एग्जॉस्टिव दिए हैं there is very little scope for any clarification नहीं श्रीमान मिस्टर उप सभापति जी माननीय खेल मंत्री जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में विवरण बताया है लागत क्या लग रही है इसके बारे में भी उल्लेख किया है और ये भी कहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन कितनी हुई हैं कब हो जाएगी कैसे होंगी जो इसके पहले सारे विवाद सामने उभर करके आए थे
उसको सुनिश्चित इसमें नहीं किया गया है। ये तो सौभाग्य है कि कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे देश में हो रहा है। ये प्रत्येक देशवासी के लिए गौरव की बात है। इसके पहले एशियाड हुआ था। एशियाड में जिस तरीके से भारत ने एशिया के देशों की अतिथि के रूप में उनका सम्मान किया और जिस तरीके से यहाँ रहे, उससे स्वाभाविक रूप से सभी लोग प्रभावित हुए और ये पूरे विश्व की नज़र इस कॉमनवेल्थ गेम के दृष्टि से लगी हुई है कि भारत के अंदर किस ढंग से इस गेम को सफल बनाने के दृष्टि से आयोजन हो रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है। ये सारी दृष्टि लोगों की लगी है। ऐसे समय में जो आयोजन समिति है और आयोजन समिति और खेल महासंघ के बीच में जो आपस के विवाद चालू हो गए, इसके कारण लोगों को लगने लगा कि आखिर ये सफलता कैसे प्राप्त हम करेंगे, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण हैं। आयोजन समिति के हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख श्री कलमाड़ी जी, उनकी अध्यक्षता में, और महासंघ के अध्यक्ष फेनेल, माइकल फेनेल, उनके बीच में दोनों में जबरदस्त विवाद चल रहा है। और विवाद इस स्तर तक पहुंचा है कि महासंघ के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि सही समय पर चीजें नहीं हो रही। प्रधानमंत्री ने भी इसको स्वीकार किया कि सही समय पर चीजें नहीं हो रही हैं, और आपस में विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे अधिकारी को हटाने की भी बात की जाने लगी। अब इसका परिणाम ही हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो कॉमनवेल्थ के देश हैं, उनमें समाचार पत्रों के माध्यम से शुरू हो गया कि हिंदुस्तान में कैसे खेल होगा। महेंद्र मोहन बोले तो 3 आदमी, और उसको लेकर के फिर चीजें इस तरीके से बढ़ी हैं कि निगरानी समिति बनानी पड़ेगी। फेलन ने निगरानी समिति बनाई आयोजन समिति को उपेक्षित करते हुए, और निगरानी समिति उसकी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री के पास जाएगी, मंत्री महोदय के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा, मंत्री जी उसके मुखिया। ये जो स्थिति बनी है परस्पर विवाद पैदा करने की दृष्टि से बड़ी भयंकर है। और जब परस्पर विवाद होगा तो कितनी सफलता होगी, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। अभी परस्पर विवाद क्यों हुआ, ये आगे स्वयं अपने आप स्पष्ट होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, मानवर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो आयोजन समिति के महामंत्री, ओलंपिक एसोसिएशन के महामंत्री श्रीमान रणधीर सिंह जी हैं, उन्होंने अपने पत्रकार वार्ता में 2 बातें कही। एक बात तो उन्होंने ये कहा कि 38 ऐसी सब कमेटीज हैं जिनको एक्टिवेट ही नहीं किया गया। जब ऐसी कमेटी को एक्टिवेट ही नहीं किया जाएगा तो काम कैसे होगा। और यह भी कहा उन्होंने कि 100 करोड़ रुपया विदेश से फेनल के द्वारा 40 एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, समय से सारी चीजें हो जाए इसके लिए बनाया गया। फिर ये समय से क्यों नहीं चीजें चल रही हैं, फिर फेनल और इन लोगों के बीच में विवाद क्यों चालू हो गया, फिर निगरानी समिति बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। एक अजीब प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्माण हुई है, जिसके कारण भारत में नहीं तो बाकी के देशों में भी एक बड़ी आशंका की स्थिति निर्माण हो गई है। ये जो स्थिति बनी है, आयोजन और आयोजन समिति, खेल महासंघ, इनके द्वारा, जिनके द्वारा सारी चीजें संचालित होने वाली हैं, इनके बीच में जब ये चीज पड़ गई तो एक बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और हिंदुस्तान के आम नागरिक को महसूस होने लगा है कि ये सही में आपस में विवाद और झगड़े के कारण ये सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान की संस्कृति पर कहीं प्रश्न न लग जाए, कहीं विवादित लोग बनाने की कोशिश न करें। इतना ही नहीं, अब खेल परिसर के बारे में आपने बात बताई। 17 खेल परिसर हैं। 17 खेल परिसरों में 2 संस्थान में तो लगभग कार्य पूरे हो गए। 5 स्थानों, मानवर जरा हमें कहने दीजिए। नहीं, ये 5 मिनट हम फॉर द मेन स्पीकर 5 मिनट्स एंड देन फॉर अदर्स 3 नहीं मिनट्स। श्रीमान, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप दूंगा, मगर देखिए अभी मुझे कहने दे श्रीमान, मुझे कहने दे। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा महत्व। अगर आपको लगता है कि हम नरगल बात बोल रहे हैं तब मुझे बैठा दीजिए। नहीं, क्लैरिफिकेशन है ये। नहीं श्रीमान, ये तो चीज आई नहीं है। जो चीज आई नहीं उसको हम नहीं प्रस्तुत करें तो कौन करेगा। ठीक है, मगर 17 खेलों में से मैं बताना चाहता हूं श्रीमान, आप इसकी तथ्यात्मक जांच करा लें। केवल 2 संस्थान तैयार हुए, 5 स्थानों पर 50% कार्य हुआ है।
इसके पूर्ण होने की पूर्व निर्धारित अवधि में क्या बढ़ानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। 10 स्थानों पर अभी भी 30% है कार्य पूरा हुआ है। 2 स्थानों की प्रगति चिंताजनक है। ये बकायदे जो आपने उत्तर दिया है प्रश्न के, वो जो आया है इसको मैं बता रहा हूं। और एक स्थान पर तो ऐसा है, जमुना खेल परिषद तीरंदाजी का दिल्ली विकास प्राधिकरण जो बनाया जा रहा है उसमें 6.75% ही है। ये तैयारी की स्थिति है। आगे चल करके क्या हालत बनेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो आवासीय व्यवस्था है, हम जल्दी कर रहे हैं मानव, जो आवासीय व्यवस्था है, आवासीय व्यवस्था की स्थिति यह है कि लगभग 8,000 खिलाड़ी और उससे जुड़े हुए लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में लोग आ सकते हैं। इसके लिए 40,000 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी, आपने भी जिक्र किया है। हमारे पास तब तक 30,000 कमरे तैयार हो पाएंगे। बाकी लोगों को दिल्ली कैसे संभाल पाएगी, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके लिए श्रीमान 2007 में जो खेलों के संबंध में 100 योजनाएं की घोषणा की गई थी, मैं तो आपके द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसी को जिक्र करना चाहता हूं। जो घोषणा की गई थी उसमें 60 पर ही कार्य शुरू हो पाया है। और पर्यटन मंत्रालय के अनुसार 115 होटल साइट में 63 केवल सुनिश्चित श्रेणी में है, 21 जो हैं संभावित श्रेणी में है और 31 अनिश्चय की श्रेणी में है। यह हालत आवास की है। फिर आवासीय व्यवस्था आपकी कैसे पूर्ण होगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्थिति में आपकी आवासीय व्यवस्था पूर्ण हो पाएगी। आपने सुरक्षा के संबंध में भी बातें कही हैं। यह बात सही है कि इस समय इस खेल को ध्यान में रखते हुए आतंकवादियों की दृष्टि भी हिंदुस्तान पर लगी हुई है और इसके लिए बहुत विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। ओलंपिक का जब चीन में हो रहा था उस समय भी उन्होंने बड़ी आधुनिकतम सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां कुछ आतंकवादियों ने गड़बड़ करने की कोशिश की थी और कुछ लोगों की जाने गई थी। आपने सुरक्षा की दृष्टि से 370 करोड़ की योजना बनाई है और 370 करोड़ की योजना के अंतर्गत क्या क्या करने वाले हैं ये तो अभी सुनिश्चित नहीं आ पाया, लेकिन इसमें से 85,000 सुरक्षा कर्मी लगाए जाएंगे, ये बात कही गई है। लेकिन ये उनकी भर्ती हो रही कि नहीं हो रही है, कब होगी, उनकी ट्रेनिंग कब होगी, कैसे किया जाएगा, यह इसमें अभी जिक्र नहीं है। साथ ही साथ चिकित्सा आदि की व्यवस्था आपको इस दृष्टि से व्यवस्था करनी है जिसका आपने इसमें उल्लेख भी किया है, लेकिन किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, किन स्थानों पर होगा, इसका कहीं जिक्र नहीं है। बजट पहले की तुलना में आपने बजट पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ा गया है। 797 करोड़ का बजट पहले था, बढ़ाकर 1620 करोड़ हो गया है। सवाल इस बात का है मानवर कि जो आयोजन समिति है इन खेलों को 1708 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त की उम्मीद करती है, लेकिन जो निर्माण कार्य है, यह निर्माण कार्य इतने पैसे को इतने कम समय में कैसे खर्च कर पाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक जो निर्माण कार्य की स्थिति निर्माण आपके सामने आई है उसकी गुणवत्ता में जबरदस्त कमी आई है और इतनी कमी आई है, दिल्ली में भी जिस तरीके से सारी चीजें उभर के आई हैं उसमें लगा है कि जो भी चीजें ली जा रही हैं ये उचित मापदंड के आधार पर नहीं ली जा रही हैं। गुणवत्ता में कमी के कारण उनके अंदर खामियां पैदा हुई हैं और इससे लगता है कि जो इतना भारी भरकम बजट आया है, जिस तरीके से इसका समुचित तौर पर यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं जो आपस में झगड़े हो रहे हैं, चाहे कमेटीज के हों चाहे बाकी सारी चीजों को हो, झगड़े हो रहे हैं, शायद कहीं पैसे के कारण तो नहीं हो रहे हैं, ये बड़े बजट के कारण तो नहीं हो रहे हैं। तो इसमें यह भी संदेह दिखाई पड़ रहा है कि पैसे का दुरुपयोग, पैसे का गलत तरीके से उपयोग एक तरह से हम कहेंगे भ्रष्टाचार के अंतर्गत जा रहा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसकी भी व्यापक स्तर पर जांच करनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण मिलाकर जो आयोजन के तरफ से जो व्यवस्था की गई है, जो खेल की तैयारी की जा रही है, संपूर्णता में देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि 3 अक्टूबर के बीच में ये तैयार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये कहा नहीं जा सकता।
साथ ही साथ एक में जमुना की तलहटी देखिए बहुत से जमुना की तलहटी में खिलाड़ियों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। देयर इज प्रॉब्लम। एक मिनट सर, एक मिनट घड़ी में व्यवस्था की गई है। उसके बगल से रेल लाइन गुजरती है, उसके शोर का कैसे खिलाड़ी और अतिथि सह पाएंगे, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। जिन जिन स्थानों पर ठहरने की, नोएडा है, नोएडा में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, वहां भी किस तरीके से चीजें की जा रही है, अभी ढंग से साइड नहीं देखी जा सकी है। इसलिए मानवर चाहूंगा कि ये सारी चीजें संपूर्णता में देखते हुए कहां कहां गड़बड़ हो रही है उसको आइडेंटिफाई करें, और जिसको हमने आपके सामने उठाया है इसको स्पष्ट करने की कृपा करें तो बहुत अच्छा होगा। विशेषकर आयोजन समिति फाइनल ने जो निगरानी समिति बनाया उसमें कौन कौन है, किस तरीके से नॉमिनेट किया, और विदेशी विशेषज्ञ कौन आने वाले हैं, इसके बारे में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable members, I would like to remind all the members the bulletin which we have issued only recently. A member who initiates a calling attention should not take more than 7 minutes, and other members who are called by the chair should not take more than 5 minutes each, and should restrict themselves strictly to. No. Pardon? No. See, time regulation is not decided by BSc. Time is given only on debate. Please, let us not. I request the honorable members. Let us not leave new precedents, and let us not try to change the rules. Please. I want to ask one thing. Sir. That is Exactly. 6 pages. No, How can calling attention it be is 7 only minutes? clarification. Please understand No, sir. that it is only clarification, not a no, debate. It is strictly said in the rules. It is no debate. It is only clarification. How much time it will take for clarification? If it is converted into debate, yes. Sir, what about it? There seems to be time limit on the discussion on Commonwealth Games, but there is no punctuality or schedule for. That is all right. That is not my that you seek that clarification. Sir, I understand that you have kept 1 hour for calling attention. Not I. It is the rules. The committee, the decision, the rule book, whatever you say, that 1 hour is allocated. But said that 1 hour should not include the minister's statement. Okay, The 1 hour should be for the members to put the question. Even if that is taken, the number of That should be out of members it. who are participating, I will not be able to finish in 1 hour 12 minutes with total. Please, I am just reminding. Sri Lipcha. Honorable Deputy Chairman, sir, I have just one to query only. Yes, you please seek the clarification. Yeah, I have just one to query only. Only yesterday has been reported that DDA, which is the in charge of the developing to the important competitions venue as well as the Commonwealth Village, has been admitted that the deadline for the completions of this venue has been extended from the December 2009 from 2010. A week before, the Honorable Minister of Urban Development has stated that the work is going on time. It has further been reported that even March 2010, handing over of these venues shall be the partial. This is not the first time incident of the delay. The construction of the Tyagraj venue has overshot its deadline of the September 2009. Various venue under the Sport Authority of India has also been delayed. How the government of India is going to complete the constructions of the competition venue on the time. It is also necessary that the sufficient time is required for the India team is to familiarize themselves with the new stadia. If these stadia are not constructed in time, our player may not get the sufficient time to the practice in that stadia, or which may reflect on their performance. How the minister intend to tackle this problem? At the present, there are 60 lakhs vehicles in the Delhi, and every day 1,000 vehicles are adding. Between 2003 and 2007, MCD announced that the 40 parking lots with the developed before the Commonwealth Game 2010. Yesterday only
it has been reported that out of 40, only 4 parking lots will be ready till December 2010, October 2010. The Chief Secretary of NCT of the Delhi has himself admitted that the MCT has been unable to decide the execution plan and changing the consultants, the companies engaged for this parking lot. How the government is going to manage the traffic during the Commonwealth Game in the absence of the proper parking lots. The Commonwealth Game is 2010 are selected as being the event that would the showcase of the new India to the world, a multicultural land, and that is the first becoming world economy leader. What are the preparations of this regards? What are the preparations for particularly relating showcase of the culture, heritage, and how the state are participating in these preparations? Thank you. Thank you. Srimati Jaya Bachchan. Thank you, sir. Sir, I think there's not much that I'd like to say because you have said it all at the beginning of the I only said the statement is exhaustive, there is very little. Yes, it is. Well, sir, we have the proud privilege of holding the Commonwealth Games in August 2010. This gives us an opportunity to showcase the efficiency and capability of the country and bid for the Olympics next time. I don't want to say much, but I really want to congratulate the Minister for the sporting spirit. We are a great nation at laughing at ourselves. This is such a big joke. I'm sorry, sir, I do not have to elaborate on this. Kalraj has said it in one word, kab kaise. I think these are the most important things. It's too obvious. I don't think it needs elaboration. It is too obvious. We are here to laugh at ourselves, make a mockery of this whole show. This is what we think about games, sportsmen, and our country. It is going to be the most humiliating experience of this nation. China was ready before the Olympics a month before, if not a year. By now, we should have started our practice drills, whether it's the traffic, whether it's medicine, whether it's school buses going, coming. What are you going to do? August is a month of monsoon. In Delhi, one shower floods the streets. There are many such questions. I do not want to take so many 5 minutes speaking rubbish because I think that it is. Speaking sense. You're not speaking rubbish. You're speaking sense. No, repeating whatever has been said, sorry. But it is too obvious, sir. It is very, very obvious. And the worst is Mr. Michael Hooper, the CEO of Commonwealth Games, said on 15th October, if you ask me whether India is ready for the Games today, my answer is no. Let us not kid ourselves. We all know a lot needs to be done. Like Mr. Fennell said, that time is our biggest enemy and every hour counts. But with the government of assessment and reports and then action, I think we are in big trouble. We should have already been on the road. I really, really feel sorry for the minister because you have the baby on your lap, but you have no nursemaids, sir. I hope you are not going to create the shoddy work that was done, and we had the disaster of the Terminal 1D where the roof got blown off twice. We have 70 countries coming in. Please, I would like to
help and support you if you need it. I know you don't need mine especially. Help. But there are other people in my party and I'm sure the rest of the house would be very happy to help. जब आपसे कोई काम नहीं हो सकता है तो किसी को मांगने में उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें आपका ह्यूमिलिएशन नहीं है. ज़मीन पर उतरिए, जो असलियत है उसको जानिए, लोगों से मदद मांगिए और अपना फेस सेव करिए, हमारे नेशन का फेस सेव करिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. श्री राजेश शुक्ला. धन्यवाद उपसभापति जी. जया जी के आखिरी शब्दों से मैं सहमत हूँ कि अब ये जिम्मेदारी सबकी बन जाती है और सरकार को भी सबसे सहयोग लेना चाहिए, चाहे विपक्ष हो, चाहे अपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, सबसे सहयोग लेना चाहिए कि इस इवेंट को सफल बनाएं, क्योंकि इसमें पूरे देश की प्रतिष्ठा जुड़ी है. किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक सरकार की प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि ये लिया गया था वाजपेयी जी के ज़माने में. उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उसका पूरा करना हमारा फर्ज बनता है. तो अब जब सबके ऊपर ये आई है, पिछली सरकार की एनडीए गवर्नमेंट के कमिटमेंट को पूरा करना हमारा फर्ज है और अच्छी तरह से हम करें, इसलिए इसमें हमें सबके सहयोग की जरूरत है. दूसरी बात यह कि इसमें सबकी चिंता है. कलराज जी ने भी चिंता प्रकट की, जया जी ने भी चिंता प्रकट की, हम सब भी चिंतित हैं इस पे कि कितनी जल्दी काम पूरा होगा. लेकिन जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट है वो निश्चित रूप से काफ़ी विस्तार में है और उसमें एक एक बात बताई गई है. और उसमें जो 14 जहाँ पे ये होने वाली हैं इवेंट्स, उन सबका पूरा ब्यौरा, उनकी डेडलाइन भी दी गई है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, आईजी स्टेडियम, एमडीसी नेशनल स्टेडियम, एसपीएम स्विमिंग पूल, करनी सिंह शूटिंग रेंज, सीआरपीएफ कैंपस, आरके खन्ना टेनिस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो ये 18 वेन्यूज इनके बारे में सबके आगे डेडलाइन उन्होंने लिख के दी है. मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि क्लैरिफिकेशन का मामला है, कि जो आपने डेडलाइन दी है इन पे काम पूरा हो जाएगा, इसके लिए क्या क्या आपने बंदोबस्त किए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जरूरी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल आने वाली है. इसलिए एक तो उस मामले में हम क्लियर कट आश्वासन चाहते हैं कि जो डेडलाइन आपने दी है उस पर ये काम हो जाएगा. दूसरी बात है कि पावर सप्लाई, उन दिनों अगर पावर कट्स हुए जैसा कि स्थिति दिल्ली में आ सकती, तो उसके लिए क्या बंदोबस्त कर रहे हैं. तीसरी, एकोमोडेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली. 30,000 लोग बाहर से आएंगे और जो देखने आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, वो अलग से हैं. और अभी कहा जा रहा है कि कुछ घरों में घर वालों को कन्वर्ट करने के लिए गेस्ट हाउसेस कहा गया. तो होटल, घर, किस तरह से एकोमोडेशन का अरेंजमेंट कर रहे हैं, इस मामले में मंत्री जी थोड़ा अगर डिटेल से बताएं तो बहुत अच्छा. तीसरे, बार बात वो झगड़े की आ रही, मुझे लगता है झगड़ा काफ़ी कुछ निपट गया है जो कलमाडी साहब और उन सबके बीच में था. और उसके लिए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सुना है उन्होंने, अच्छा अखबार पढ़ा करो ना, सुना है, या कलराज जी को ध्यान से सुना करो आप. प्लीज. आपकी समस्या है कि अपने नेता की आप नहीं सुनते हैं, कलराज जी को सुन लेते समझ में आ जाता. नो प्लीज. ये जो है मैं मंत्री से जानना सुना उन्होंने इस पे कदम उठाया है और एक अधिकारी को अपॉइंट किया है सीओ के रूप में, जो मॉनिटरिंग पूरी कर रहा, और इस तरह से कोई जो भी डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो उसका क्या, और दूसरे प्रिपरेशन ऑफ टीम्स के प्रिपरेशन का क्या हो रहा है, क्योंकि वो काम भी उतना महत्वपूर्ण है. अगर भारत कहीं इनमें इवेंट करा के भी सबसे नीचे टैली में रहा तो भी अच्छी बात नहीं है. तो मेरा मानना है कि इन सारी चीज़ों पर मंत्री जी अगर प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा रहेगा. धन्यवाद. Okay, thank you, Mr. Shukla ji. Now, Sri Moinul Hasan. सर, सब लोग दी है, मेरे लिए सब लोग दी है, आप भी दी है. हाँ, सब लोग दी है, आप भी दी है. Sir. Yes. Thank you, sir. Moinul Hasan ji. Yes. According to the minister's statement, that game was signed 2003, but the stadium was started 2008. I would like to know that how in between, this time was not, what is the working was done this 4 years, 4-5 years. My second question, according to the minister's statement,
regarding to the power meet. To meet power demand, we have seen that the main power come to this area from the Dadri project and DVC first plant. But Dadri power plant first unit and DVC first plant not yet operationalized. In 2006, DVC first plant was in a position to operationalize, but not yet. So what will happen? So for the parking is concerned, already Mr. Lepcha has told. But I would like to say that NDMC has decided regarding the automated multi-leveled parking. It will be decided for the 24 was planned and it is started at 2007. What is the progress at present? Anything? Sir, another single point I would like to say, that is, what is the theme and concept of opening ceremony? How much expenditure you have marked for this? Last question, sir. Now, Secretary already told. Who are the volunteers to act as a volunteer in this mega event? Is it school students, NCC or Scout? I would like to know from the Minister when he replied. This much. Thank you, Mr. Moinul Aslamji. Sri N.K. Singh. Thank you, Sir. The first point that I want to raise before the Honourable Minister through you is that, is he in charge? There are too many cooks in the kitchen. There is one cook which handles Delhi's infrastructure. There's one cook that handles tourism and adequate provision of rooms. There is one which handles security. There is one which handles different kinds of coordination. Too many cooks in the kitchen. Is there a principal chef? And can we designate the Honourable Minister who is to answer as the principal chef in the kitchen who is to coordinate all these kind of divergent responsibilities? That's my first question to the Minister. My second question, well, he is suggesting a dishonorable thing which I will ignore, that you are in a soup, but I don't think you are in a soup. We would like you to be the principal chef. And if you are the principal chef, I'm sure that the brew would be one which has all the amalgams right. Three other questions, sir. There is mention in the statement about public-private partnership. And all that the statement says is that this work is on track and will be completed on time. Could the Minister share with us more details of the nature of this public-private partnership, which has been mentioned in his statement? Who is the private entrepreneur who is the partner? And what is the reason why we remain so sanguine that this part of the work will be on time? My third question to the Minister is that in the annexure which has been contained in his detailed statement, he has given the details of the work which is directly connected, namely the sports part of it. There's a whole lot of work which is connected with infrastructure, upgradation of the city, doing up the old city, on which there is no statement of physical and financial progress. So could the Minister wish, through him directly or through the concerned agencies, like to share with the House the details of the physical and financial progress in respect of the infrastructure? My last question to him is that there are repeated newspaper reports on shortage of what he claims is only 30,000 rooms, but what the newspapers say are about 50,000 rooms. Who is constructing the rooms? Who is responsible for it? What is the kind of the physical availability which we will have with the large number of guests which we are receiving? Would the Minister like to share with us the progress being achieved by that coordinating entity on the adequacy and the availability of rooms which is adequate enough for us to be so sanguine regarding the overall matrix of the planning which he has undergone? Thank you. Thank you, Sri N.K. Singh. Now, Sri, I can, as per the rule, each party is given one name, that's over. But I can call some more names which are already given.
but only specific questions should be asked. Not more than 1 minute. Not more than 1 minute. After 1 minute, I will ring the bell. Sri Sardar Tarlochan Singh. No, your party already spoke. Sir, thank you. Okay. Sir, we are all grateful to Shri Atal Bihari Specific Vajpayee question. ji who brought the games to India. Because of him, India is hosting these games. The Honorable Minister has explained in detail. My particular question is that games were allotted in 2003 and now in 2010. So for delay of this 7 years, the Olympic Committee or the organizing committee is not responsible. It was responsibility of the CPWD and Delhi government, and the blame is coming on the organizing committee. Minister should have come out with a statement why this delay occurred and who are the responsible for that, and why India is getting bad name on that. Organizing committee is appointed by the Indian Olympic Committee, which is an autonomous body which has all the authority, and games are allotted to the Olympic Committee. Secondly, sir, yes, that is enough. Now Minister has assured we are happy, but my point is that we are now more concerned with the results to be achieved. As Mr. Kalraj Mishra has said, that Minister should come out in which games we are doing more, which are our priority games, where we need more attention and more money to be spent. And now India wants to know with all the expenditure and what will be our results, and we should be happy on that. And thirdly, sir, lastly, the traffic is a big problem. Minister has not mentioned. Delhi is going to be chaos on traffic. Thank you, sir. Saman Padak, specific question, only 1 minute. थैंक यू डेप्यूटी चेयरमैन साहब. मैं मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया, मैं अभिवादन देना चाहूँगा उनका प्रयासों का, और उन्होंने जो ब्यौरा दिया. मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा, कुछ क्लियरिफिकेशन. जो तैयारी चल रहा है, अभी भी कुछ समाचार पत्रों में भी आया है, अभी भी कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी तैयारी बाकी है. 5 क्षेत्र जो रिस्क जोन बताया गया है, तो इसको किस तरह से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं या किस तरह से पूरी होगी, ये मंत्री जी जरा बताइए. ऐसा ना हो कि हम लोग जल्दीबाजी में, जैसे एक हादसा हुए थे पहले मेट्रो का कहीं गिर के 2-3 हादसा हुए, ऐसा ना हो, जल्दीबाजी में कुछ ऐसा हादसा ना हो. उसको किस तरह से माने पूरा कर पाएंगे, ये जरा मंत्री जी क्लियर करें. और कॉमनवेल्थ गेम को चलते जो निर्माण, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण है, आखिर इन्हीं निर्माण कर्मियों से ये बनना है, जो मजदूर है इन्हीं से बनना है. लेकिन इनका बहुत सारे समस्या है. इसको लेकर साथ एक कमेटी भी बनी थी, उसका हियरिंग भी चला था. तो उन मजदूरों को जो दिन रात काम कर रहे हैं, इन्हीं के द्वारा कंप्लीट होना है, तो उनका समस्या के बारे में भी क्या कदम उठाए गए. Now, Sri, no, he finished. He made all his points. Yeah, he's very. Yeah. सब एक इम्पोर्टेंट ये है कि कॉमनवेल्थ गेम का जो अभ्यास स्थल है, इसको ढांचा तैयार करने के लिए एक कंपनी, मुंबई का कोई कंपनी डीडीए ने नियुक्ति किया था. लेकिन ये 60% काम करके वो छोड़ के चले गए. तो उसका बदले में शायद दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को लाया, अभी चल रहा है. लेकिन ये कंपनी का विरोध में क्या कानूनी कार्रवाई किया गया, सरकार से किया गया, ये बताएं. श्री वीरेंद्र प्रसाद बैश्या, श्री बैश्या नहीं, श्री राजनीति प्रसाद. मैं 1 मिनट में ही खत्म करूंगा, घंटे बजाने की जरूरत नहीं. सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि सर अभी तो ट्रैफिक का ये हाल है कि अगर एक जगह से दूसरा जगह जाना हो तो 1 घंटा लगता है, और जब वो ट्रैफिक कॉमनवेल्थ का होगा तो उसमें तो और समस्या हो जाएगी सर. इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो लाखों लोग आएंगे और लाखों लोग यहाँ आएंगे जाएंगे, जगह पर जाएंगे, तो उसके लिए आप ट्रैफिक की क्या व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था करेंगे. एक सवाल सर. दूसरा सवाल ये है कि आपने ये कहा है कि बाहर से जो खिलाड़ी लोग आएंगे वो हज़ारों की संख्या में आएंगे, और बाहर से देखने वाले भी लोग आएंगे, हिंदुस्तान से नहीं बाहर से लोग भी आएंगे. तो उनके रहने की व्यवस्था जो आप कह रहे हैं वो व्यवस्था कितना पर्याप्त है? क्या रामलीला मैदान में भी कुछ टेंट वगैरह लगाएंगे क्या? वो ये मैं yes, take a seat. Now, राम नारायण साहू, सिर्फ 1 मिनट.
क्या करूं सर these are additional names. हमारे सभी साथीगणों ने कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के बारे में बताया और पूछा लेकिन जैसा कि हमारे खेल मंत्री जी जो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं इनको बताना चाहूँगा कि इनके आने के बाद में थोड़ा सा खेल में प्रगति जरूर हुई है, लेकिन जो खेल की तैयारियों के बारे में बताया कि खेल की तैयारियां चल रही हैं, उसके बारे में कोई विशेष बात अभी तक के जो पिछले परिणाम रहे हैं वो बड़े दुखदायी रहे। केवल ओलंपिक में हम शूटिंग के अंदर एक गोल्ड ले करके और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो 1 अरब 20 करोड़ की आबादी में हम एक गोल्ड मेडल शूटिंग में, वो कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, तो उसी को लेकर के हम जो है तो, और जो हमारा मेन खेल है जो जिसको सब लोग जानते हैं, जैसे कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम है, हमारा फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी तो इसमें शामिल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी देखिए नहीं, ये ध्यान देना चाहिए इस बात के ऊपर। हम कहाँ के ऊपर थे, लोग आगे बढ़ते हैं, हम पीछे हट रहे हैं। अगर फुटबॉल का आप देख लीजिए, आप हॉकी का देख लीजिए, आप बैडमिंटन का देख लीजिए, केवल भारत का जो ध्यान है केवल क्रिकेट के ऊपर है। क्रिकेट मैच के अंदर उसके अंदर माल ज़्यादा आता है ना, पैसा ज़्यादा आता है, तो उधर ध्यान है। बाकी ये जो खेल है, जो मेरा राष्ट्रीय गेम है हॉकी, हम वहाँ कहाँ पे नंबर है। अभी जो वर्ल्ड की रिपोर्ट आई है, हम 250 देशों में 165वें नंबर पे है। बताइए हम इस पे कहा जा रहा है कि हम तीसरी ताकत बनने जा रहे हैं, लेकिन तीसरी ताकत वहाँ तो 165 ताकत है। तो तैयारी करने के लिए इसको लिए जो अच्छे वर्ल्ड के नामी वो कोच हैं, उनको बुलवाया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए और अच्छे खिलाड़ियों का उसमें रखा जाए। बहुत धन्यवाद। Sir. No. Take your seat. No, please. Thank you. Please take your seat. Thank you. No, I called the Lopi, then you should sit. Even otherwise, when the Lopi gets up, you should sit. Huh? Sir, we are in a state of a last-minute panic, and there is a legitimate concern as to whether the infrastructure necessary for the games will be completed or not. 2003 is when the games were allotted to us. 2005 when the International Committee first visited us, and there is no plausible reason why the stadium construction should have started in 2008. The most important component of the game is the sport itself. Now, because we started in 2008, the Honorable Sports Minister should consider the fact the stadiums will be completed in 2010, and if we look at whether it's Olympics or Commonwealth Games or Asian Games, the host nation always promotes a large number of its sportsmen, and therefore there is a host advantage that you have. China topped the tally in the Beijing Olympics. They got the host nation advantage. Because you are familiar with the local conditions, you are familiar with the stadia. Now, by getting our stadiums to be completed at the 11th hour, have we lost the host nation advantage completely? And therefore, the expectation that there will be a major boost to Indian sports and our medal tally will go up actually suffers when our preparations take us to the last minute itself. The second question, sir, no nation today in various disciplines of sport is a master of all. There are countries which steadily declined. The example of Britain is there. But then they concentrated on 3 or 4 sports which became areas of their core competence and increased their overall medal tally. It happened in the last Olympics. That's how England improved its medal tally, by just concentrating on 3 or 4 sports for medal purposes and playing the others for the general purpose of the game itself. We don't seem to have done that. It's now clear that wrestling, boxing, rifle shooting, these are all areas where we are producing sportsmen. So would it not be better that the special concentration and training is on those 4 or 5 sports which are really of middle prospect, rather than those where there is no hope we have of even qualifying anywhere
final rounds of the Olympics, sir. 2 or 3 more questions, sir. There has been a very ugly conflict between our organizing committee and the international committee. So much so that when you host international events, a certain level of statesmanship is required. We don't come up and say that this organization of game is actually a fight against imperialism. These are the statements which, and I'm using this exact statement which emanated from our local organizing committee. Is the government also going to make sure that when the actual event is on, we don't have this kind of an ugly scene where our organizing committee and the international committee are at war with each other, and therefore we hear less of sport and more of a conflict which is a clash of personalities. Is the government monitoring the costs involved in all this? Because we get an uneasy impression that when last-minute tenders are being awarded and in a hurried manner work is being done, the markup is very high. And therefore, the whispers going around in town with regard to the allotment of tenders, the costs at which tenders have been awarded because of this last minute, we are actually going to suffer a lot of extra cost because of this factor, and subsequently we'll have the CAG going into these all these questions and how much we spent extra because of this. There is a special reason why a keen eye of the government and the central government must be on this at the last minute. And lastly, sir, much is being said that we are spending all this money, but we will recover it from the profit of the games itself. Now, does the government seriously expect a profit? Why don't we be realistic? The main earning is only from in-stadia advertising and also from television rights. Now, where are television rights of certain sports may get you a large amount of money, but there are events where the television rights don't earn you any kind of money, and therefore, barring cricket and to some extent now soccer, it's the government which is substantially funding various sports because those games are not able to earn anything as far as television rights are concerned. So are we being realistic by saying that we expect a profit which will compensate the cost that we are putting into these games, sir? That's all I have. Thank you, Jelly. Now, Mr. Minister. Yes? Give my name. No? Where is the no, your name is not there. Can I take 1 minute then? One question, question. half a minute. Sir. No. Specific question. Specific question. Yeah. Specific. We are all proud that we are going to have Commonwealth Games in this country and in the city of Delhi. And it is this committee and this country has the experience of holding many games. Recently held Afro-Asian Games, SAF Games, World Military Games, many other world championships already. So these are in the able hands. Only the infrastructure, the question is of the infrastructure. There are some infrastructures like NBC National Stadium, Carney Shooting Range and Tyagaraja Sports Complex are supposed to be completed in next month. Whether